Divide the polynomial px by the polynomial gx. So दो polynomial है, एक ये polynomial है, एक polynomial ये है. So if you see, the bigger polynomial has to be divided by the second polynomial. ये polynomial है x cube में और ये polynomial है x square में. So this bigger polynomial has to be divided by the smaller polynomial. So here, if I have to copy down so that you will be able to understand this better. So I'm going to do the long division method. So x cube minus 3x square plus 5x minus 3, x cube minus 3x square plus 5x minus 3 has to be divided by x square minus 2, right? This is the question. So सबसे पहले always remember, note down the question very carefully, because इसमें error हो गया तो फिर what is going to happen, the entire question goes wrong. So x cube minus 3x square plus 5x minus 3 by x square minus 2. Okay, x cube minus 3x square plus 5x minus 3 divided by x square minus 2. So that's the question. Now look at the first term here. This is x cube, and the first term here is x square. First term here is x cube. First term here is x square. आपको ये देखना है x square will go how many times in x cube. x square को किससे multiply करें ताकि ये x cube आए. So x square has to be multiplied by x. X square into x आएगा x cube. Now remember, when you are multiplying, the powers will get added. तो ये power क्या है 2 और ये power क्या है 1. So class 9 में आपने किया x to the power a into x to the power b is x to the power a plus b. जब multiply करते हैं तो powers add होते हैं. So x square into x, x cube. फिर ये जो number है -2 has to be multiplied with x. So -2 into x, -2x आएगा. That has to be written below 5x. तो आपको क्या करना है, इसको multiply करके इसके नीचे लिखना है. ये नहीं कि यहाँ लिख दिया, because like terms should be written one below the other. तो -2 into x क्या है, -2x हो गया. ठीक है, ये -2x. Now the signs will change. Now the signs will change. जैसे normal subtraction होता है, always remember to change the sign. ये minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा. Now x cube will get cancelled. This यहाँ पे कोई भी change नहीं होगा. This will be as it is. So this will be -3x square. Now 5 plus 2x. The change sign है वो आपने देखना है. So what have we changed the sign to? Plus. So 5x plus 2x, you will get 7x, and this will be written as it is -3. Now x square will go how many times in -3x square? See the first term here. -3 times. -3 times. So x square will be multiplied with -3. So x square into -3, yeah, again -3x square. -2 into -3, you will get +6. Yes, sir. Okay? Which will ultimately give -9. Yeah. So here I'm going to change the signs. ये plus हो गया, ये minus हो गया. This is going to get cancelled. So here we get 7x, -3 minus 6, you get -9. So here what has happened, we will stop. Why will we stop? Because now the remainder is 7x minus 9. इसका जो power है वो इससे कम आ गया. So whenever we find that the remainder's degree is less than this divisor, then we will stop. So our answer will be quotient is x minus 3. And the remainder is 7x minus 9. Now, if the remainder is 0, then we can say it is a factor. Okay. Sometimes they will also ask you, is it a factor of this polynomial or not? So right now it is not a factor. Why? Because the remainder is not 0. Like in question number 2, they will ask you, is it a factor? So right now you have to just divide, and we have to find the quotient and the remainder. Okay. I hope this is clear. You can redo this as many number of times till you get the correct answer. And the idea of giving a recording is that you need to play it if you don't understand. क्योंकि कई लोग मैं देख रहा हूँ divide करना नहीं आ रहा है. So although it was in class 9, इतना ज़्यादा किया नहीं है class 9 में. So you need to practice this, because this whole exercise is dealing with division of polynomials. Okay. So this is our question 1 part. And same way, can write it down. Yeah. Sir, all these calculations, if somebody is facing issues, like for instance, sometimes I face an issue of multiplication, so I can write it down and multiply it and see if the answer is coming. Yeah, absolutely. Always you can verify by multiplying whether the answer is coming or not. And to get the
answers correct, it's important that you do the same question multiple times on your own, because once you will see the solution, once you will try to do on your own, ho sakta hai it's not coming, try it again. So you need to do it multiple times. If you're doing it correctly, then proceed. Otherwise, don't be in a hurry to finish off exercise, go to the next chapter. Try to do things thoroughly. Because see, right now we are not concentrating on the speed. What is important is get the answers correct. So you are taking 5 minutes, 10 minutes, doesn't matter right now. Okay, so try to do the sums carefully after understanding the questions. Okay, see the second part now. This is x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. You are dividing by x square plus 1 minus x. Now, one thing that we have to understand is whenever we do a division, always make sure that it is in the standard form. Standard form ka kya matlab hota hai? The highest power will come first, then decreasing powers. देखो ये 4, 2, 1 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री के हिसाब से क्या आना चाहिए? x square will come first, then minus x. No, it will go on the other side, so it will become plus x and then minus 1. Minus x and plus 1. Okay, so this has to be rearranged. So don't do the question as it is. Always do the question by rearranging first. So I'm going to copy down this question now. X to the power 4 minus 3x square. This is part 2. X to the power 4. Sir, in that, yeah. Sir, in the dividend, after x raised to the power of 4, x cube is missing. That's okay. That's their wish. वो तो missing है या कुछ है, so if x cube is not there, so you don't have to fit in x cube. Standard form doesn't mean that all the terms should come. It just means that it should be in decreasing order of powers if it is there. Whatever is there, that one. Okay, so x4 minus 3x square plus 4x plus 5. This is the dividend. I am going to divide this by x square plus 1 minus x दिया हुआ है, तो इसको मैं order में लिखूंगा तो x square minus x plus 1 आएगा. X square minus x plus 1. Now I am going to divide this. X square will go how many times in x to the power 4? कौन से number से multiply करें ताकि ये x4 हो? X square into x square will be x to the power 4. As I told you, powers will get added. Now here we have to be very careful. देखो minus x into x square जब इन दोनों को multiply करेंगे ये आएगा minus x cube. This is probably what Ram was mentioning कि x cube तो है ही नहीं है. So minus x into x square is minus x cube. तो यहाँ minus x cube नहीं है तो आपको last में लिखना है, किसी के नीचे नहीं लिखना, because there is no x cube term here. तो हमें क्या करना है? Minus x cube, x minus x into x square minus x cube बाहर लिखना है. Then 1 into x square is 1x square. That we can write here. समझ में आई ये बात? X square into x square is x to the power 4. Minus x into x square is minus x cube. That I will write separately here. 1 into x square is 1x square. Subtract, I will change the signs. Now when you are changing signs, इसको भी change करना है. कई लोग क्या करते हैं, इसको वैसे का वैसे ही रख देते हैं, thinking that ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, ये सब चेंज होगा. जो भी नीचे नंबर्स आते हैं, all that has to be changed. So x4 is getting cancelled. Minus 3x square minus 1x square, we get minus 4x square plus 4x plus 5. No changes in this, and this has become plus x cube, and this is the highest power. तो इसको सबसे आगे लाना है आपको. जो highest power वाला है वो सबसे आगे लाना है. So we get x cube minus 4x square plus 4x plus 5. Now x square will be multiplied by which term to get x cube? ये आपको देखना है. X square will be multiplied by x only, 1x. X square into x is x cube. Minus x into x, we will get minus x square. 1 into x is 1x. So I have written 1x. You can simply write x also. एक ही बात है, right? Either you write 1x or x, that's okay. So again, I'm repeating this step. I have put x here. Why? Because I want x cube. So x square into x cube. Minus x into positive x is minus x square. 1 into x is 1x. Now again, I'll subtract. Yes, ask. Somebody wants to ask. Yes. Sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt that, sir, you said that we change the signs of the polynomials which are below. Yeah. Yeah. So, sir, if we don't change the signs and move on, so then what will happen, sir?
नहीं वो तो गलत है ना, देखो सपोज यू आर डिवाइडिंग 7 by 2, ठीक है, 2 3s are 6, अब हम ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको? सर वी सब्ट्रैक्टेड। We subtract, तो डिवीजन तो ऑलवेज वी सब्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट ऐड बिकॉज वी आर फाइंडिंग द रिमाइंडर, बाकी कितना बच गया ये फाइंड कर रहे हैं ना हम ऐड थोड़ी ना, हम ऐड करके रिमाइंडर थोड़ी आएगा, रिमाइंडर इज व्हाट, 2 3s are 6, नाउ व्हाट रिमेन्स, रिमाइंडर का मतलब हो गया कि क्या बाकी बच गया वो है, सो 7 2 3s are 6 हो गया, तो कितना रह गया ये आपको पता करना है, तो आपको सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, ये तो नॉर्मल डिवीजन का रूल है, वो वायलेट नहीं कर सकते। So you Okay, have to sir. change the sign. Unless you change the signs, आपका subtraction नहीं होगा, फिर आपका आंसर गलत होगा, right? So x cube is getting cancelled. Minus 4x square plus x square ये हो गया minus 3x square. Minus 4x and minus plus 4 and minus 1, 4 minus 1 positive 3x plus 5 as it is, right? Now x square है यहाँ पे और minus 3x square है, so I have to multiply this by minus 3. So x square into minus 3, I will get minus 3x square. Minus x into minus 3, I am going to get positive 3x. 2 will be the remainder. हाँ 2 will be the remainder. नहीं 2 नहीं है, देखो 1 into 8 minus, sir, 8 will be the remainder. आपने साइन चेंज नहीं किया लग रहा है, सर Sign 8। sign. हाँ यहाँ सर पे 8 will be the remainder। माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे चेंज करना है, देखो चेंज नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 3 हुआ, माइनस 3 यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, आपको प्लस करना है, चेंज करना है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपका 8, कोशेंट आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ओके, कोशेंट आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर आ जाएगा 8, ठीक है, समझ में आ गया? इट्स नॉट गोइंग टू बी 2, इट्स गोइंग टू बी 8। Yes sir. Yes, sir. Okay. But sir, I have a doubt, sir. Yeah, tell me. Yes, sir, if the polynomial is already negative, so sir, why do we change it to positive then? नेगेटिव का भी Cancel all the देखो, terms. सपोज आई वांट टू सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 7, सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 7, तो मैं क्या करूंगा, 7 माइनस ऑफ -6, सब्ट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव है ना, ऑलरेडी नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव से कुछ नहीं होता, आई हैव टू, व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग आई हैव टू चेंज, आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर दैट, इफ आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर दैट, तो माइनस है तो वो प्लस होगा ना, सपोज ये क्वेश्चन है क्लास 7 में करते हो, सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 7, तो हम कैसे करते हैं, 7 माइनस Minus Minus bracket 6. -6. ये करना पड़ेगा ना, तो 7 + 6 हो जाएगा, ये तो बेसिक रूल है, सब्ट्रैक्शन मतलब यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन, नहीं तो फिर एडिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर एडिशन हो जाएगा ना, जब सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आते थे ना, सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर प्लस 5 फ्रॉम -x स्क्वायर प्लस 3, अब ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो मैं और नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, तो दिस माइनस दिस तो करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन चेंज होगा, दैट इज द रूल। एडिशन में चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। Okay, sir. अब देखिए थर्ड पार्ट, डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाय x स्क्वायर माइनस 2। Sir, that is wrong. It is what you have read is the first one. नहीं ये Read again. third sorry, yeah, x to the power 4 Yes. minus 5x plus 6, thank you for the correction, divided by 2a problem, minus, sir. तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फिलहाल, दिस इज This नॉट इन द is- स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस It हैज टू should be बी, x square plus 2. नहीं आप चेंज मत करो, -x स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस है x स्क्वायर, Oh yes, yes. so don't change the Minus sign, will all. only the order will change, don't change the signs at all, ठीक है, तो ये -x स्क्वायर Okay, sir. प्लस, right, so Thank x square, x to the power 4 minus 5x plus 6, Sir, you can इसको also हम- write plus x to 0 the power bar 4, x cube. That Yeah, can so- also do that. 2 minus x square, you have to change the order, minus x square पहले लिखना है फिर प्लस 2, कोई भी साइन हमने चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ x स्क्वायर को पहले लिया है, और ये क्वेश्चन में देखिए it is minus x square, so don't make it plus, don't change any signs here,
because the divisor should be as it is. 2 minus x square है तो बस हम plus 2 को बाद में ला रहे हैं तो minus x square plus 2. Now minus x square will be multiplied by which term to get x to the power 4? We will have to multiply it by minus x square क्योंकि minus और minus क्या होता है plus. So minus x square into also we get x to the power 4. 2 into minus x square we get minus 2x square. ये अलग से लिखेंगे because there is no x square term here. There is no x square term here. It is x to the power 4 minus 5x plus 6. तो इसको हमने अलग से लिख दिया. Now I'm going to subtract. I'm going to change the signs. So I hope this is clear now. Whether it is positive or negative sign, तो आपको change you have to करना change. ही पड़ेगा. So this is getting cancelled. Minus 5x plus 6 ऊपर से as it is निकाल दिया. This has become now positive 2x square. I'm going to write it at the beginning. Why? Because x का power highest है 2. So I'm going to write this here. Now minus x square will go in how many times in 2x square? किससे Sir, multiply? minus 2 times. We'll have to do it with minus 2 because minus minus plus हो Minus गया. and minus plus and 2 And x into x square square will give 2x square. 2x square. So I'm going to get 2x square and 2 into minus 2, I'm getting negative 4. Yes, sir. 2 into minus 2, I'm getting negative 4. Now I'm going to subtract, the signs will change. 2x square cut Minus gaya. 5x plus 10. You are going to get minus 5x as it is, and 6 and 4 when I add, I'm going to get 10. So this is my remainder and this is my quotient. Yes, sir. Okay, so kindly practice this because this is very यही crux है पूरे chapter का main चीज division of polynomial है जो ज्यादा marks के आते हैं. So this needs to be done thoroughly. So I hope you've done question 1. Done. Okay, so we go to question number 2 now. That is again the same thing. The only thing is the question says, check whether the first polynomial is a factor of the second by dividing the second by the first. इसमें भी वही काम करना है division का ही. बस इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, whether the remainder is coming 0 or not. इसको इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है कि नहीं ये बताना है. अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है. So let's start with the first one. This is 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 divided by t square minus 3. Okay, so I'm rewriting this for you. Question number 2, first part. 2t to the power 4, 3t cube, 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 minus 90 minus 12 divided by t square minus 3. We are dividing this by t square minus 3 and we are finding out whether this polynomial is a factor of this or not. तो कैसे पता लगता है फैक्टर है कि नहीं? जस्ट डिवाइड करना है नॉर्मल जैसे अभी किया. Yes, sir. And if the remainder is 0, yes, remainder is 0, it is a factor, else not. So t square will go how many times into t4 that we will see. So that will go 2t square. 2t square times. So t square into 2t square will give you 2t to the power 4. Powers are added. Minus 3 into 2t square we get minus 6t square. Minus 6t square यहाँ आ गया. ठीक है, t square के नीचे ही लिखेंगे. Signs will change with minus and this will become plus. Plus 2t to the power 4 कट गया. 3t cube as it is. 6 minus 2 आ गया 4t square. ऊपर से आ गया minus 90 minus 12. ऊपर में कोई चेंज नहीं करना है. Only these things will change. Now t square will go how many times in 3t cube? ये देखना है. So this I will multiply by 3t. T square into 3t. So t square into 3t will become 3t cube. Minus 3 into positive 3 will give you minus 9t.
90 इसके नीचे लिखना है. Now I'm going to subtract, the signs will change. Positive 3t cube and minus 3t cube cut gaya, minus 90 and plus 90 cut gaya. You are left with 4t square minus 12. Now t square will go how many times in 4t square ये देखना है. So t square will go 4 times. T square into 4 आ गया 4t square. Minus 3 into positive 4 आ गया minus 12. Signs will change. ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया. Therefore, it is a factor. So in this question, we have to do this additional step. If the remainder is 0, we will just say it is a factor. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट अ फैक्टर. सो दिस इज बाय द लॉन्ग डिवीजन. लास्ट ईयर आपने किया था एक रिमाइंडर थ्योरम, वो अलग है, उसमें क्वोशंट नहीं आता, उसमें सिर्फ रिमाइंडर आता है. रिमाइंडर आता है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम. या ओनली रिमाइंडर कैन बी फाउंड बाय रिमाइंडर. कई लोग रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इफ द क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर देन यू कैन यूज, बट इफ यू क्वेश्चन इज डिवाइड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, वो नहीं लगा सकते आप. ओके, सो ये आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा. So here the first part we did and we found that it is a factor. A factor, sorry. Now let's do the second one. Divide 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. You have to divide by x square plus 3x plus 1. Okay? Yes, sir. Second part, 3x4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. You are dividing by x square plus 3x plus 1. You are dividing by x square plus 3x plus 1. Okay? 3x4 Yes, plus sir. 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 divided by x square plus 3x plus 1. Plus 1. Step number 1, Sir, this is x square and this is 3x to the power 4. So x square will go how many times? 3x square. Square times. X square into 3x square. When I multiply, I am going to get 3x to the power 4. Then I'll multiply these two, 3 into 3, 9, x into x square, x cube. So ये आ जाएगा आपका 9x cube. This is going to be 9x cube. 3x square. 1 into 3x square is positive 3x square. Now I'm going to subtract. So every number signs हम change करेंगे. 3x4 कट गया. 5 minus 9 you get minus 4x cube. Minus 4x cube. Minus Here you 10x get square. minus 7 and minus 3 minus 10x square Plus 2x. plus 2x plus 2. Yes, sir. So now it will go by minus 4x. Now this is x square and this is minus 4x cube. So x square will go minus 4x times. So ये हो गया minus 4x cube. 3x into minus 4x 12x square. minus 12x square. 1 into Minus minus 4x. 4x is minus 4x. I'm Signs going of to change the signs. ये कट जाएगा. 12 minus 10, I'm going to get 2x 2x square. square. 6x plus Plus 6x I meant. I will get 6x plus. Plus 2. So now you will just take 2. Simple. Now x square here and 2x square here. So x square will be multiplied with 2. So x square into 2 we get 2x square. 3 into 2 we get 6x. 1 into 2 is 2. I'm going to subtract this so you realize that all the terms are getting cancelled. So remainder is 0. Therefore, it is a factor. So the first one was a factor. The second one is also a factor. Now we have to just check for the third. So you can note down this, that the second one is also a factor. So those who are doing polynomials,
kindly practice this and make it thorough, these questions, because this whole exercise and even the next one, optional exercise, if you are taking up standard maths, you need to do the optionals also. तो उसमें भी division है काफी. So you need to do these division processes. So now we go to the third part of question 2. Again, division of one polynomial by the other. This is x cube, x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. Third part, x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 divided by x cube minus 3x plus 1. Sir, I am getting remainder as 2. So remainder आ गया 2 सही है. Remainder can be 0, it can be anything else. So if you are not getting 0, that means it is not a factor. It is factor. Okay. Not a factor if it is not 0. So x cube will be, you have multiplied x cube with x to the power 2. Yes, sir. Yes. You will get x to the power 5 minus 3x into x square. We will multiply these two. We will get minus 3x cube, right? And 1 into x square, you will get x square. Step number 1. आपने x cube को x square से किया, x5 आ गया, minus 3x into x square, minus 3x cube, 1 into x square, x square. Now change the signs. सब प्लस है, माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये कट गया. minus 4 plus 3, you get minus x cube. x square भी कट गया, plus 3x plus 1 ऊपर से as it is लिख दिया. Now x cube will go how many times in minus x cube? Minus 1. Minus 1 से multiply करूंगा तो x cube into minus 1, I am getting minus x cube. Minus 3x into minus 1, ये आ गया positive 3x. 1 into minus 1, ये आ गया minus 1. And when I change the signs, I am cancelling this, I am cancelling this. Tendency ये होती है कि इसको भी काट के 0, ये 0 नहीं है, लेकिन ये 1 plus 1 बन गया है. Remainder आपका 2 है, और remainder 2 है तो conclusion क्या है? It is not a factor. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन फैक्टर होगा, कुछ क्वेश्चंस नॉट अ फैक्टर भी होंगे. So first two was it is a factor, third one it is not a factor. Okay, so I'm giving you a few seconds to wind up this, then I'll explain to you the next one. और जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड आएगा, because last time some students were finding this difficult, those who are doing polynomials division में थोड़ा अटक रहे थे, तो ये आपको वीडियो देख के समझना है और खुद करने की कोशिश करना है. So if you are coming for this class और polynomials आप कर रहे हो, तो please do this on your own and then you can try it. And then still if you are getting stuck, you can ask me, okay? But it's important that you always practice before you come for a class. So question 1 and 2 हमारा complete हो गया है. अब question number 3 है. Very important question, mark कर दो. Obtain all the zeros of this polynomial, that is 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. दो जीरो ऑलरेडी दिया है, तो इसको हम मानते हैं अल्फा एंड बीटा. The two zeros of a polynomial are represented by alpha and beta. And here the power of x is 4. इसका मतलब हमें 4 zeros निकालने हैं. जितना power होता है, जितना डिग्री होता है, उतने ही zeros निकलते हैं. 2 zeros are given. हमारा challenge है 2 more zeros निकालना, right? So this इसको mark कर लो, very important. कोई भी exam होता है, ये जरूर आएगा. इसका एक solved example भी है, वो भी आपको try कर लेना आप. So first thing is हमने एक formula याद रखना है, x square minus sum x plus product. Those who did polynomials, they know this formula.
कभी भी अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला? x square minus sum into x plus product. So x square minus sum means you have to add the zeros। अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, और प्रोडक्ट मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। So x square minus सम मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस बिकम 0 into anything तो 0 बन गया। √5 into √5 is 5 and √3 into √3 is 3, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये -5/3, तो ये बन जाएगा x square minus 5/3। नाउ डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मैंने तरीका बताया था, जो भी डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 से मल्टीप्लाई इसको किया तो ये आ जाएगा 3x square minus 5/3 into 3, तो ये आ गया 3x square minus 5, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारा, हमने ये फॉर्मूला लगाना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। x square minus some x plus product, this is the formula that we will apply. Now once we get this quadratic polynomial, अब इजी है। अब हमें क्या करना है, हमने लॉन्ग डिवीजन तो सीख लिया है, तो अब हमें डिवाइड करना है द क्वेश्चन बाय 3x square minus 5। We have already found out the quadratic polynomial, now you just have to divide this। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3x square को x square से मल्टीप्लाई किया 3x4, -5 into x square minus 5x square, then I'm going to change the signs, ये subtract हो गया, this is getting cancelled, ये आ गया 6x cube, 5 minus 2 you get 3x square, bring down the numbers from top, minus 10x minus 5, 3x square will go how many times, 2x, तो ये हो गया 6 cube minus 10x, again change the signs, ये नॉर्मल डिवीजन है जो हमने क्वेश्चन 1-2 में किया, रह गया 3x square minus 5, 3x square will go once, so 3x square minus 5 into 1 minus 5, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर हैज टू कम 0, ऐसे जब भी आपका क्वेश्चन आता है रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपका 0 नहीं आया इसका मतलब आपने गलत किया है। सो पहले हमने ये फॉर्मूला लगा के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, फिर लॉन्ग डिवीजन से यू हैव टू डिवाइड, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है। फिर कोशेंट आएगा, कोशेंट का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, x square plus 2x plus 1 जो है उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे x square एंड ऐड करने पे 2x, सो योर फैक्टर्स आर x and x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सेकंड एक्सरसाइज में है और 9th में भी आपने किया है। तो जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, x plus 1 x plus 1। नाउ you equate it to 0, then what will you get, x is equal to -1 and -1, दोनों सेम आएंगे। So 2 zeros alpha and beta were given, now we have found 2 more, तो आंसर क्या है, 4